Myself, Dr. Himangi, Assistant Professor at PP Samani Homeopathic Medical College and Hospital. Today we will discuss about mechanism of hearing. Our learning objectives are sound transmission, mechanical amplification, cochlear response, hair cell activation, and neural transmission. First, we will discuss about sound transmission, how the sound wave transmitted to the inner ear. So, sound waves are collected by the external ear. External ear के through sound wave will be collected and funneled into the auditory canal, also known as ear canal. Now, the sound will strike to the tympanic membrane, causing it to vibrate. Now, due to hitting of the sound wave, tympanic membrane will be vibrate. The vibration occurs due to the difference in the air pressure caused by the sound wave. Now, second is a mechanical amplification. So, the vibration of the tympanic membrane are transmitted to the three tiny bones in the middle ear, the malleus, incus, and stapes. Now, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेशन वाइब्रेट होने की वजह से जो मिडिल ईयर में तीन बोन है मेलियस इंकस एंड स्टेपिस they also vibrate. Now the malleus is attached to the tympanic membrane and transfer the vibration to the incus, and this incus will transfer the vibration to the stapes. Now stapes then transmit the vibration. The stapes will transmit the vibration to this oval window, a membrane covered opening leading to the inner ear. Now, third is the cochlear response. Now, how the cochlea will respond for this vibration. So, the oval window acts as an interface between the middle ear and inner ear, allowing the mechanical vibration to the transmit to the fluid-filled chambers of the cochlea. ये जो vibration है, that will be transferred to the cochlea. Cochlea is filled with the fluid. So inside the cochlea, this mechanical vibration caused the fluid within the cochlear duct to move. As the result of this movement, the basilar membrane, which run along the length of the cochlea, vibrates in response to the different frequency of sound. Now, different due to vibration जो frequency produce होगी, उसकी वजह से जो cochlea के ऊपर अंदर basilar membrane होता है, that will also vibrate. Now, hair cell activation. Embedded within the basilar membrane are thousands of sensory hair cells, which are specialized mechanoreceptors. ये जो basilar membrane है, उसके ऊपर क्या होता है? बहुत ज्यादा thousands of sensory hair cells. वो क्या है? What is sensory hair cells? So that is the mechanoreceptors. Now, what is mechanoreceptors? Means that type of receptors. uh, uh, it will convert mechanical energy to the electrical energy, right? So the movement of the basilar membrane causes the hair cell to bend or sway in response to the fluid movement within the cochlea. फ्लूइड में मूवमेंट होने की वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन में मूवमेंट होगा और बेसिलर मेम्ब्रेन में मूवमेंट होने की वजह से हेयर सेल में मूवमेंट होगा. अभी हेयर सेल में मूवमेंट होगा उसकी वजह से क्या होगा? हेयर सेल इज अ मैकेनिकल रिसेप्टर, सो मूवमेंट की वजह से वो एक्टिवेट होंगे. एंड व्हेन द हेयर सेल बैंड mechanical-electrical transduction occur. Now, what is mechanical-electrical transduction? That means the mechanical energy will convert into the electrical energy. But that means the movement that will convert into the action potential. So, mechanico-sensitive ion channels open. उसकी वजह से मैकेनिको सेंसिटिव चैनल्स मतलब ऐसे आयन चैनल्स जो मूवमेंट होने की वजह से ही एक्टिवेट होगी, ओपन होगी और उसकी वजह से आयन अंदर आएगा और उसकी वजह से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट विल बी कन्वर्ट इनटू द एक्शन पोटेंशियल and that action potential will propagate it to the central nervous system. So mechanical sensitive ion channels open or close, leading to the changes in the membrane potential of the hair cell. Now, the neural transmission.
So activation of the hair cell triggered the release of neurotransmitter at the synapse between the hair cell and the auditory nerve fibers. अभी हेयर सेल एक्टिवेशन हुआ, उसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा साइनेप्स पे। अभी वो कौन सा साइनेप्स है? तो बिटवीन हेयर सेल और ऑडिटरी नर्व। यहाँ पे जो हेयर सेल है उसने साइनेप्स किया हुआ है ऑडिटरी नर्व के पास, तो वहां पे neurotransmitter release होगा. Now this neurotransmitter initiate the action potential in the auditory nerve fiber और ये neurotransmitter जो action potential generate करवाने में help करेगा, which then propagate towards the central nervous system. Now द ऑडिटरी नर्व फाइबर्स, यहाँ पे साइनेप्स होने की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर जब ऑडिटरी नर्व फाइबर्स के थ्रू वहां पे रिलीज होगा तो ऑडिटरी नर्व फाइबर्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और ये एक्शन पोटेंशियल आगे प्रोपोगेट करेगा. सो द ऑडिटरी नर्व फाइबर्स प्रोजेक्ट टू द कॉक्लियर न्यूक्लियर इन द ब्रेन स्टेम. वो ब्रेन स्टेम पे आएगी. कहाँ पे? ब्रेन स्टेम में. तो कॉक्लियर न्यूक्लियस के पास आएंगे where the further processing of the auditory nerve information begins. Now, from the cochlear nuclei, auditory signals ascend. यहाँ से फिर से auditory signals ascend होंगे और वो कहाँ जाएंगे? तो प्राइमरी ऑडिटरी एरिया cerebral cortex में होता है, वहां पे वो जाएंगे. So from the cochlear nucleus, auditory signal assigned to the various brain region, including the inferior colliculus, medial geniculate nucleus of the thalamus, and ultimately auditory cortex in the temporal lobe. मतलब यहाँ पे. Now where the perception and interpretation of the sound will occur. और यहाँ पे perception और interpretation of the sound होगा. मतलब कि जैसे ये साउंड वेव आया, उसने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे हिट किया, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट किया, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने ट्रांसफर किया वाइब्रेशन कहाँ पे? तो मिडल ईयर में. मिडल ईयर में 3 बोन है. कौन कौन से? तो मैलियस और इंकस एंड स्टेपिस. सो वहां से स्टेपिस के पास वाइब्रेशन आया. स्टेपिस ने वो ओवल विंडो था वहां पे हिट किया, जिसकी वजह से कॉक्लिया मूव हुआ. वहां कॉक्लिया वाइब्रेट होगा तो कॉक्लिया के अंदर फ्लूइड है, फ्लूइड भी वाइब्रेट करेगा. तो बेसल मेम्ब्रेन जो है दैट विल आल्सो वाइब्रेट और बेसल मेम्ब्रेन के पास हेयर सेल होते हैं तो हेयर सेल भी वाइब्रेट करेंगे. नाउ दैट हेयर सेल क्या है? तो दैट इज मैकेनिको रिसेप्टर्स. ऐसे रिसेप्टर्स जो मूवमेंट होने की वजह से वाइब्रेट करेंगे तो एक्टिवेट होंगे. तो वो हेयर सेल एक्टिवेट हुए. हेयर सेल ने क्या किया? उन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया. न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे रिलीज हुआ? तो हेयर सेल ने किसके साथ साइनेप्स किया? तो हेयर सेल ने साइनेप्स किया ऑडिटरी नर्व के साथ यहाँ पे. सो ऑडिटरी नर्व पे साइनेप्स करने की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर ऑडिटरी नर्व में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाने में हेल्प करेंगे. सो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ. सो इसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मैकेनिको इलेक्ट्रिकल ट्रांसडक्शन ऑल्सो. बाय, क्योंकि जो मैकेनिकल मूवमेंट थी वो कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल मतलब एक्शन पोटेंशियल. नाउ दिस इंफॉर्मेशन विल ascend and reach to the cerebral cortex. और यहाँ पे साउंड का इंटरप्रिटेशन होगा. मतलब साउंड कहाँ से आया है, कितनी पिच से आया है और उसके अकॉर्डिंग फिर मोटर सिग्नल्स, मोटर इम्पल्सेस मसल्स के पास आएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट mechanism of hearing. Thank you so much.